Hello everyone, welcome to the next session of CSAT Weekly, and in this video we will discuss the questions of equations from 2018 onwards, and we have already seen that this is one of those topics जिसके every year at least 3 to 4 questions have been asked. Questions are of easy level of difficulty, they are not that tough. Also, once you understand the question, solving the question is also not a problem, right? Sometimes the length of the question becomes an issue that we see and we think that this is a lengthy question, but it's not true in all the cases. The solution might be easy. Just reading the question might take 1 minute more than what your single line question would take, right? So that is the thing here, and we'll be starting with question of 2018. Before that, we will see how many questions have been asked in the previous year as well. So, in 2018, 3 questions were asked, and then in 2017, also there was one more observation that in the recent years, that is 21, 22, 23, 24, the questions that were asked, they had lengthy statement and they were majorly of whether the statement is enough to answer the questions or not, whereas, and mostly comparison, whereas in these years the statements have also been short only, right? For example, this question, this statement is not that lengthy as that statement ki statement 1 is enough, 2 is enough. Okay, you had 2 statements and then you had to tell statement sufficiency, right? So in 2017, 4 questions have been asked. 2016 also 3 to 4. So basically 2016 2 questions were asked, 2015 again. So basically this is the average, that on an average every year question have been asked. In 2011 and 12, the thing is that the pattern of the paper was not that similar to the ones which we do today, because it had a lot of data and a lot of data interpretation and reasoning and everything. So the question of statement also, question of equations also were asked in form of logical reasoning. For example, you will get a set and you will get 2 questions and you will get comparison, A is greater than B, B is greater than C. So in that question also you have to make comparison, but that is a logical reasoning question, right? So in these years, okay, so in 2015, 5 questions were there from this topic. Similarly, 2014 also, 2 questions, 2013, 2 questions were asked. So you can see that there was no year when the question of equation was not asked. That means this year also equation का question पूछा जरूर जाएगा. And then level of difficulty भी you will see it is not high in any year. So ये कैसा topic हुआ? One of the topic that will fetch us good score. Now let's move on to the first question. We will see whether the level of difficulty of the question is tough or not. So the first question is, a number consists of 3 digits of which middle one is 0, right? So we have already done these kinds of questions. Number is what? X, 0, Y. This is the number. Middle one is 0, X is the first digit, Y is the unit digit. And their sum is 4. Sum is 4 means what? X plus 0 plus Y is equal to 4. That means I can say X plus Y is equal to 4, right? Next is, if the number formed by interchanging first and last digit, that means Y, 0, X. Now this number is formed, is greater than number itself by 198. That means Y0X minus X0Y is 198. न्यू नंबर जो कि एक्सचेंज करके फॉर्म हुआ है is greater than the older number by 198, right? Find the difference between the first and last digit. That is, you have to find X minus Y or Y minus X, whatever it is, you have to find the difference between X and Y. So first point to notice is
यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्यों गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वी हैव कंक्लूडेड, तो इसका यूज भी करेंगे. x plus y is equal to 4 is possible in how many cases? Firstly, it is possible in what? 2 plus 2. When x is 2, y is 2, then it is possible. But then my number will be what? 202. On reversing, number will be 202. This is equal. लेकिन difference आना चाहिए 198. That means this case is not possible. Next, what is the possibility? Take x as 1, y as 3, then 103. See, मैं 103 क्यों ले रही हूँ, 301 क्यों नहीं? Because when you exchange the digits, that means when you exchange, then you will get 301 minus 103, you will get 198. New number should be greater. तभी उनके बीच का difference by interchanging the digits is greater than number itself by 198. New number is greater. That means old number is 103, तो new number is 301. हम यहाँ पर 1 और 3 ले रहे हैं, 3 और 1 नहीं, so that exchange होने के बाद new number should be greater, right? So that means the two digits are what? X is equal to 1, y is equal to 3. This is my answer. Now you will say x plus y is equal to 4 is also possible if I take this 0 and 4. But then my number will be what? Then my number will be 004. Again, this is not possible. So this is also not a possibility. The only case you have is if you take x as 1, y as 3. And for that, we know difference between x and y we have to find out. ये find करना था ना? X, what is x minus y? X minus y, difference between these two is 2. So option B will be my answer. Again, ये बिल्कुल easy level of difficulty का question था, not that tough. And statement understanding was also not difficult, right? So once you know how to form equations, once you wrap your head around the pattern of questions that are there in this equation, you will see that questions इतने tough नहीं है. Also, you can see that we have done these kinds of questions. ये XY वाला question था जहाँ पर exchange हुआ. Similar question we have done in previous video where you had the number 10x plus y and then you write 10y plus x. You exchange the digits. Similar kind of question we did in first video of equations where again you had 10x plus y, you wrote 10y plus x, right? So similar questions have been asked. That is why we are doing topic wise analysis, so that along with knowing that इस topic के इतने questions आ रहे हैं and level of difficulty क्या आ रहा है questions का, you should also know कि pattern क्या आ रहा है, repeat कैसे हो रहे हैं question, right? Now question 2 is, if pen is less than pencil, pencil is less than book, book is greater than cap, which of the following is always true? Now this is a very simple question. Pen is less than pencil. ठीक है, ऐसे लिख दे. Pencil is less than book. So can I write it like this? Pencil is less than book. ठीक है, so ये तो एक equation बन गई. अब book is greater than cap. So यहाँ पर आप ये sign नहीं put कर सकते. Why? Because this equation is following this inequality. Is following this sign of less than. A is less than B is less than C is less than D होगा ना, greater than D होगा तो मतलब inequality का pattern break हो गया. So this is what we cannot do. So that means we can compare pen, pencil and book. ठीक है? At the same time, I can write this individually कि book is greater than cap. ठीक है? Pen pencil से कम है, pencil book से कम है, book is greater than cap. ठीक है? So if you want to write it like this, you can also say cap is less than book. So it will make things more easy for you. This is an example of, for example, say 1 is less than 2, 2 is less than 20, 10 is less than 20. ठीक है? ये भी एक possibility है. Then there is also a possibility of 1 is less than 2, 2 is less than 20 and 0 is less than 20. यहाँ पर cap यहाँ पर आएगा, यहाँ पर cap इधर आएगा, right? Also one more possibility, if you take 1.5 तो cap यहाँ आएगा पेन और पेंसिल के बीच में. ठीक है? So we cannot tell relation between these two,
but we can tell relation between pen, pencil, book and cap, book individually. So question में क्या है? Which of the following is always true? Pen is greater than cap. Pen और cap में relation. I just told you right now कि हम एक equation में relation बता सकते हैं, but ये तो दो equation है. We cannot tell the relation between these two. So I cannot tell pen is less than book. Pen is less than book. Yes, this is true. Pencil is equal to cap. Again, I cannot tell this. Pencil is greater than cap. Again, I cannot tell this. Pencil और cap को आप compare ही नहीं कर सकते. You can only compare cap with book. So ये तीनों option जहाँ cap था, all three options will be eliminated. Only option B will be your answer. Right? So again, this question was also not that difficult. अगर आपने actually analysis करोगे तो you will see that आगे भी similar questions have been asked. जो ये question है 2018 का, on the same lines question have been asked in next years also. Now, question number 3. So a bookseller sold, this is A, sold A number of geography textbook at the rate of rupees X per book. A books कितनी है और रेट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है. दिस इज सब्जेक्ट ज्योग्राफी की A बुक्स एट द रेट ऑफ X पर बुक, ठीक है. देन A प्लस 2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, हिस्ट्री की A प्लस 2 बुक्स एट द रेट ऑफ X प्लस 2. ओके. A माइनस 2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स की A माइनस 2 बुक्स एट द रेट ऑफ X minus 2 per book. What is his total sale in rupees? So total sale, that means total क्या है? A books at the rate of X, one book at the rate of rupees 2, तो 2 rupees multiply करते हैं हम. So ये क्या हो जाएगा? AX. ये क्या हो जाएगा? A plus 2 multiply X plus 2. This will become what? AX plus 2X plus 2A plus 4. And this will become what? A minus 2 multiply X minus 2. This is what? AX minus 2A minus 2X plus 4. Now ये यहाँ लिख दें, आपको ये सबको ऐड करके बताना है टोटल सेल्स. So AX plus AX plus AX 3AX, right? Then 2X minus 2X cancel, 2A minus 2A cancel, 4 plus 4 8, 3AX plus 8. ऑप्शन B will be your answer. Again इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी. यू हैव टू फर्स्ट फॉर्मुलेट द इक्वेशन एंड देन सॉल्व की टोटल वैल्यू कितनी होगी, राइट. सो दिस इज फॉर द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2018. So you can see तीनों ही क्वेश्चन, all the three questions were not that tough. In fact, they were of easy level of difficulty only. And if you know the basic of equations, if you know how to form equations, number interchange कैसे करते हैं, then it is not difficult for you. It is your plus point, right? Now, let's move on to the next year, that is the year of 2017. First question is, sum of income of A and B is more than that of C and D taken together. So A plus B taken together is more than C plus D. Sum of income of A and C, A plus C, is same as that of B plus D taken together. Moreover, A earns half as much sum of B and D. A कितना earn कर रहा है? Half of sum of B and D. This is also given to you. Whose income is highest? You have to compare. So can I say from here 2A is what? 2A is equal to B plus D. ऐसे लिख ले, 2 इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया. अब यहाँ पर B plus D है. Can I say A plus C is equal to B plus D की जगह, in place of B plus D I can put 2A here. That means C is equal to what? 2A minus A. So I can say C is equal to A. This is my conclusion, right? So
नाउ यू कंपेयर हियर, इफ C is equal to A, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग 10 plus B is greater than 10 plus D, तो 10 तो एक, it is the same amount adding on both sides, you will say okay B is greater than D. ठीक है, 10 में आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो एंड 10 में दूसरी वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये अगर बड़ी वैल्यू है दैट मीन्स ऑब्वियसली डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, बी की वजह से आ रहा है, सो बी इज ग्रेटर देन डी. सिमिलरली हियर ए इज इक्वल टू सी, कैंसल आउट, बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज ग्रेटर देन डी. हुज इनकम इज द हाईएस्ट, ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू ए, तो इनकी इनकम हाईएस्ट नहीं हो सकती, बी डी से ग्रेटर है, सो इनकम ऑफ B is the highest, right? Now moving on to the next question. Question number 2. There are 3 pillars X, Y and Z. Ab before discussing this question, I would like you, if you have not seen equations video 2, I would like you to see that also, बिकॉज ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस देयर. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, वो मंकी जंप करता है स्लिपरी वेल से, वो वाला क्वेश्चन था, एंड यू विल सी दैट सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ये कौन सा 2017 का, 2019 में सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अ मंकी जंप्स ओवर अ स्लिपरी वेल एंड देन 30 मीटर जंप एंड स्लिप्स 15 मीटर. तो वहां पर हमने जो कंसेप्ट यूज किया था दैट टोटल अगर 30 जंप्स हैं, 1 jump less, that means 29 jumps में monkey will complete the task. So that was the answer, right? यहाँ पर भी same concept will be used. Now let's read the question. There are 3 pillars X, Y, Z of different heights. 3 spiders A, B, C start to climb on these pillars simultaneously. So X पर A climb कर रहा है, Y पर B starts climbing and Z पर C. A climbs on X by 6 वो climb कर रहा है but 1 से slip कर रहा है, 6 but slips down 1 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर जंप करके 1 सेंटीमीटर स्लिप हो जाता है, तो 6 plus 6 minus 1 that means A कितना क्लाइम कर रहा है, 5 in 1 jump. Next you have B climbs on Y by 7 centimeter. 7 का क्लाइम है, स्लिप्स डाउन 3. सो इन टोटल B कितना जंप कर रहा है, 4. नेक्स्ट यू हैव C climbs on Z by 6.5. दैट मीन्स व्हाट, 6.5 का जंप ले रहा है, स्लिप्स डाउन 2 -2 4.5. दिस इज व्हाट वी गॉट टिल नाउ कि एक जंप में 5, 4 एंड 4.5 का डिस्टेंस कवर हो रहा है. नाउ इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 chances to reach the top of the pillar, what is the height of shortest pillar? ये पूछा. ठीक है, सबको कितने चांसेस रिक्वायर्ड है, 40 चांसेस रिक्वायर्ड है. अब देखो, रिमेंबर दैट इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी डिड द सेम थिंग कि 29 जंप्स तक तो 6 - 1 6 - 1 ऐसे होगा जैसे प्रीवियस था 30 - 15. ठीक है, बट 30th जंप क्या होगी, सिर्फ 30 प्लस, बिकॉज तब तो वो स्लिप नहीं करेगा, that frog will be out of the well. Similarly here in 40 chances, that means 39 chances में तो 5 का इंक्रीज होगा, बट 40th जो कि लास्ट चांस है उसमें टोटल 6 का, क्योंकि एंड में आप बाहर निकल गए वेल से तो आप स्लिप नहीं करोगे, राइट? आप पोल के ऊपर चढ़ गए तो आप स्लिप नहीं करोगे. ठीक है, दैट वाज द ट्रिक हियर. तो वो वही ट्रिक यहीं पर भी है, 39 × 5 + 6. दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस पोल. हेयर ऑल्सो 39 × 4 + 7, length of this pole. In this case also 39 × 4.5 plus the next one में क्या है, 6.5 की जंप. So solving this you will have what, 39 × 5 plus 6. Can I say this is what, 40 × 5 plus 1, right? If I shift 5 here, so 40 × 5 is 200 plus 1, 201.
right? Similarly here 39 multiply 4 plus 7, can I say this is what 40 multiply 4 plus 3, ठीक है, 3 extra, so 40 multiply 4 is what 160 plus 3, so this will be what, this is 201, right? This is 163, and then this one 39 multiply 4.5, again 40 multiply 4.5 प्लस 2, यहाँ से 4.5 इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो अगेन यू विल गेट 180 प्लस 2, 182 है. So which pillar has the smallest length? 163, that is pillar Y. Option B will be your answer, right? This is what you have to find out. What is the height of the shortest pillar, right? Also आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो that let's say I have concluded this, that x को x एक जंप में 5 कवर कर रहा है, 4 एक जंप y एक जंप में सॉरी स्पाइडर b is covering 4 in one jump and this 4.5 in one jump, right? ये 5 लेके भी 40 जंप्स लगा रहा है, ये 4 का डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस लेके भी 40 जंप्स में इसका काम हो रहा है खत्म, ठीक है? एंड ये 4.5 जंप्स में भी 40 जंप्स में इसका काम खत्म हो रहा है. सो दैट मीन्स इसका पिलर सबसे छोटा होगा, दैट इज वाई वो 4 लेंथ की जंप लेके भी सेम जंप्स में कवर कर रहा है जितने में x एंड z कर रहे हैं. So instead of solving all of this, you can also just solve for y and b only, right? Then also you will get the answer. Next is question number 3. 6 boys A, B, C, D, E and F play a game of cards. Each has a pack of 10 cards. F borrows, each has a pack of 10 cards. So A, B, C, D, E, F सबके पास 10 कार्ड्स हैं. F borrows 2 cards from A. So A ने 2 cards F को दे दी, right? This is how borrowing works. You negate from one and you add to another. ठीक है? सिर्फ ऐसे नहीं करना कि F plus 2 हो गया या A minus 2 हो गया, दूसरे में add भी करना है. Then gives away 5 to C. अब उसने 5 कार्ड्स किसको दे दिए? C को, राइट? Who in turn gives 3 to B. Now C ने क्या किया? 5 कार्ड्स to C. C ने क्या किया? Gives 3 to B, -3 plus 3. While B gives 6 to C, 6 to D. B ने क्या किया? 6 कार्ड्स D को दे दिए, राइट? Who passes on 1 to E? So B ने 6 कार्ड दिए D को और D ने 1 कार्ड E को दे दिया. So this is your final result, right? So A के पास कितने कार्ड्स रहे? 10 minus 2 8. B के पास 10 minus 3 7. C के पास 10 plus 5 minus 3, that means 12. D के पास 10 plus 6 minus 1, 15 cards. E के पास 11. And with F, F has 10 minus 3, 7 cards in total, right? If you want to check whether you have done it correctly and or not, you can add these as well and see सबके पास 10 cards थे तो total 60 cards आ रहे हैं या नहीं. So 8 and 7, 15 and 15, 30 and 12 and 11 is what? Again 23 and 7, 30, 30 plus 30, 60. Total of this is also 60. That means आपने ठीक calculations किए, right? Next, then the number of cards possessed by D and E is equal to number of cards possessed by whom? So number of cards by D and E कितने हैं? 15 plus 11. This is 26. आपको चेक करना है ये किसके इक्वल है. So option A क्या है? A, B, C. A is 8, B is 7, C is 12. So 8 and 7 क्या है? 15 plus 12, that means 27.
सो इसके इक्वल तो नहीं है। नेक्स्ट BCF, B क्या है 7, C कितना है 12 and F is what 7, 7 plus 12 plus 7 that means 12 plus 14 26. सो ये 26 ही यहाँ पर है, 26 यहाँ पर है, सो ऑप्शन बी BCF दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, अगेन ऐसे क्वेश्चन वी हैव डन प्रीवियसली ऑल्सो, A gives this much to B, takes this much from C, so ऐसा क्वेश्चन भी you will see it has been repeating itself, the type of question is recurring again and again in the examination. So ये वाले क्वेश्चन भी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं। इन अ टेस्ट रणधीर obtained more marks than the total marks obtained by कुणाल एंड देबू। ओके, रणधीर के मार्क्स जो है मोर देन कुणाल एंड देबू। ओके, टोटल मार्क्स obtained by कुणाल एंड शंकर, कुणाल प्लस शंकर के मार्क्स आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। सोनल obtained more marks than शंकर, सोनल के मार्क्स आर मोर देन शंकर मार्क्स। नेहा obtained more marks than रणधीर, सो नेहा obtained more marks than रणधीर। Who amongst them obtained highest marks? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हम किस किस को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर आई कैन सी, देखो R एक सिंगल वैल्यू है, उसके मार्क्स K प्लस D, दो स्टूडेंट के मार्क्स मिलाकर भी ज्यादा है R के मार्क्स, दैट मीन्स ऑब्वियसली R इज ग्रेटर देन K, R इज ग्रेटर देन D। इतना तो क्लियर हुआ हमें, राइट? सो आई कैन से व्हाट, R K से बड़ा है एंड R D से बड़ा है, ऑल्सो N is greater than R, नेहा के मार्क्स R से बड़े, so this is the comparison you can draw that नेहा के मार्क्स R से ज्यादा है और R के मार्क्स K D से ज्यादा है, इसमें हमें अभी नहीं पता। ठीक है, now who amongst them obtained the highest marks? so अभी तक हम बोल सकते हैं if you compare नेहा, रणधीर, कुणाल and देबू, नेहा has the highest marks. now we are left with सोनल and शंकर, तो शंकर का R से कंपैरिजन यहाँ पर हो सकता है, but see कुणाल प्लस शंकर इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स व्हाट, ये भी हो सकता है कि शंकर के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन लेट्स से आई एम सेइंग 1 प्लस 90, ठीक है, दिस इज 91, आई कैन से इट इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, शंकर के मार्क्स रणधीर से ज्यादा है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो से 1 प्लस लेट्स से 79, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये भी बोल सकते हैं 1 प्लस 79 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, दैट मीन्स शंकर के मार्क्स क्या है, रणधीर के इक्वल है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर भी आप डेफिनेटली नहीं बता सकते शंकर के मार्क्स ज्यादा है, शंकर के मार्क्स कम है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव 5 प्लस 79 दिस इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, यहाँ पर भी शंकर के मार्क्स क्या हुए, रणधीर से कम, ऑल्सो या अगेन हेयर ऑल्सो शंकर is greater than Randhir. So you will have multiple cases when you will assume different values for this. Basically what I am trying to say is Shankar and Randhir के marks you cannot compare until and unless there is a definite relation between them. तो यहाँ तक तो हमने compare कर लिया and we also know कि सोनल के marks शंकर से ज़्यादा है. ठीक है, so we also know सोनल के marks शंकर से ज़्यादा है, but इन दोनों equations को combine करने का there is no way with us. If I want to combine 1 and 2, there is no relation with us. So that is why we cannot say कि किसके marks ज़्यादा है. So option D, data inadequate. Option D will be my answer. Right? Moving on to the next question.
of CSAT 2016, it is what? In aid of charity, every student. Okay, now this is one question जिसकी ना statement में students बहुत confuse हो जाते हैं, but इतना easy question है कि इसमें कुछ भी confusing नहीं है, in fact calculation भी नहीं है कुछ solve करने के लिए, there is nothing in this question. So question क्या है? In aid of charity, every student in the class contributes as many rupees as the number of students. So for example, class में 5 students हैं, they are contributing 5 rupees each. So how many rupees you will get? 5 multiply 5. 6 students हैं तो 6 rupees each. So 6 multiply 6. 7 students हैं तो 7 rupees each. 7 multiply 7. Right? So यहाँ पर हम क्या मान लें? Let's say n students हैं class में. So n multiply n. कितने rupees आए? n square. ठीक है? With the additional contribution of ₹2 by one student. अब एक student ने 2 rupees extra contribute किए. That means total contribution क्या आया? n square plus 2. Total collection is 443. ये question था सिर्फ. So n square plus 2 is 443. n square is equal to 441. तो n की value क्या आ गई? 21. From options also you can see. ऑल दो इतना 25 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, राइट? सो n वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? 21. अगेन दिस वाज अ लिटरली 10 सेकंड क्वेश्चन, 10-15 सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, and in this question you have, okay, again very easy question. So you will see that in these videos of equations, every time I am saying very easy question, very easy, because the questions are actually very easy, right? And कुछ भी नहीं है. For example, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है आपको जो याद करना है, there is nothing. तो this is basically जो हम हमेशा CSAT में बोलते हैं कि स्कूल लेवल की आपकी स्कूल लेवल मैथ्स पूछी जाती है. दिस इज योर बेसिक 8-9 स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन, इनफैक्ट बिफोर दैट ऑल्सो 7th स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं NCERT में, राइट? So these are the very basic questions that are being asked in UPSC. In a class there are 18 very tall boys. ठीक है? If these constitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of total number of students in the class, what is the number of girls in the class? So एक class में 18 very tall boys हैं and ये क्या है? 3/4 of the boys. So 3/4 of total boys is equal to 18, right? So can I say what? Total boys is 24. इतना सा. Next क्या है? Next equation पे आ जाओ. Total number of boys is 2/3 of total number of students in the class. So boys is 2/3 of all the students. So boys is what? 24 is equal to 2/3 of all the students. This means students are what? 36. पूछा क्या है? What is the number of girls? Students 36 है, boys 24 है. So girls कितने हो जाएंगे? 36 minus 24. Option B. This will be your answer, right? So अब देखो, as I was saying, easy question. No major equation making also in this, right? Now let's move on to the question of CSAT 2015. First question is, if A runs less fast than B. क्या मतलब हुआ? A is speed of A is less than B. इतना सा. And B runs as fast but not faster than C. इसका मतलब क्या हुआ? B runs as fast but not faster. That means B is equal to C. Then as compared to A, C runs slower, faster, ये पूछा है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी करना है? B is equal to C है तो यहाँ पर C लिख सकते हैं एक ही जगह. A is less than C. ऐसे लिख दें, बिकॉज B तो C के इक्वल है. B लिखो या C लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो A is less than C. पूछा क्या है? एज कंपेयर टू A, C runs faster than A. C
स्पीड ऑफ सी इज ग्रेटर, सो सी रन्स फास्टर देन ए. इतना सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ ए बी सी डी हैज ₹100. अगेन सी देखो, वो क्वेश्चन था अभी अभी हमने किया, ए बी सी डी ई एफ हैव ₹10 ईच, 10 कार्ड्स ईच. यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ ए बी सी डी हैज ₹100. कोई किसी को कुछ अमाउंट दे रहा है, कोई किसी को कुछ अमाउंट दे रहा है. यू विल सी व्हेन यू विल एनालाइज कि सेम क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड, and then we say that CSAT was very difficult, pattern was changed, paper was changed, question was changed, so many excuses. But excuses are only for those who are not doing the hard work, who are not putting in efforts to analyze. And यहाँ पर तो we are doing everything, you just have to watch all of this, right? So A क्या है, A B C D has ₹100 each. Each of A B C D has ₹100. Same question is being repeated and A pays ₹20 to B. So A ने B को ₹20 दे दिए. Who pays 10 to C? B ने C को 10 दे दिए. Who gets? Now C gets 30 from D. ठीक है. In the context, which of the following statement is not correct? I always say read the question properly, because when the question is easy, sometimes examiner does this. ठीक है, not correct है, और let's say you have not read this properly, so C is the richest, you will say yes, C is the richest, option A. जबकि this is wrong because you have to tell not correct. ठीक है, D is the poorest. Now you just check what is the actual amount with everyone. 10 minus 20, 80. 10 plus 20 minus 10, 110, and 100 minus 30, 70. So पूछा है incorrect बताना है. D is the poorest. Yes, D is the poorest. So this is also not correct. C has more than what A and D have together. A के पास 80 है, D के पास 70 है. So A plus D is 150. C is 140. C has more than A and D? No. So option C is incorrect. That is why C is my answer. D भी देख लो, B is richer than D. Yes, B has 110 and D has 70. So this is also correct, but we have to tell which of the following is not correct. So option C. Right. Now moving on to the third question. In a parking area, total number of wheels of all cars, that is four-wheelers and scooters. ठीक है, मोटर बाइक, टू व्हीलर्स. ठीक है, सो फोर व्हीलर्स भी हैं, कुछ टू व्हीलर्स भी हैं. लेट्स से फोर व्हीलर्स है X, टू व्हीलर्स है Y. ठीक है, इज नाउ टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स, फोर व्हीलर्स के व्हील एंड टू व्हीलर्स के व्हील इज 100 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स. सो फोर व्हीलर्स में कितने व्हील्स होते हैं? फोर व्हील्स इन वन व्हीकल. ऐसे ही X vehicles are there, so 4 multiply X plus 2 wheels in one vehicle, so 2 multiply Y. This is what? 100 more than twice number of parked vehicles. How many vehicles are parked? X plus Y. ठीक है, ये क्वेश्चन था. आपको बताना है नंबर ऑफ कार्स, दैट इज नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स X. ठीक है, सो इसको सॉल्व करो. यू विल हैव व्हाट? 4X plus 2Y is equal to 100 plus 2X. In general, I told you that when you have two variables and one equation, you cannot solve. But इस equation को solve करके देखो. 2y cancel. So 4x minus 2x is what? 2x is equal to 100. Now how many variables? When you finally solve it, how many variables? One variable, one equation. So you can solve x is equal to 50. So how many four-wheelers are parked? This is what? Option C. 50 will be my answer. Right? Now, moving on to the fourth question of 2015. देखो, इस question में क्या है? A cow cost more than 4 goats. एक cow है. It cost more than 4 goats, but less than 5 goats.
ठीक है. If a goat cost between 600 and rupees 800, which of the following is the most valid conclusion? ठीक है. सो आपके पास ना गोट का कॉस्ट गिवन है, बट यहाँ पर आप कंपेयर करना चाहते हो काउस को. ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट इज द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन? कॉस्ट ऑफ काउ, कॉस्ट ऑफ काउ, कॉस्ट ऑफ काउ. काउ का कॉस्ट बताना है, कहाँ से कहाँ लाए करेगा. ना लेट्स से गोट का कॉस्ट कितना है? मिनिमम 600. सो अगर आप मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम गोट्स परचेज करो, दैट इज 4 है ना, 4 गोट्स. तो 4 गोट्स मिनिमम कॉस्ट पे कितनी होंगी? 4 मल्टीप्लाई 600, 2400 विल बी द मिनिमम कॉस्ट, राइट. ऑल्सो अब ये मैक्सिमम गोट्स एट मैक्सिमम कॉस्ट, 5 गोट्स एट 800 रुपीज. So this will be what? 4000. So minimum to maximum range of value of cow will be what? 2400 to 4000. This was your question. Option D, cow cost between 2400 to 4000. इतना सा क्वेश्चन था. मिनिमम वैल्यू को मिनिमम से मल्टीप्लाई करना है सो दैट यू गेट द मिनिमम कॉस्ट, एंड मैक्सिमम को मैक्सिमम से सो दैट यू गेट द मैक्सिमम अमाउंट. नाउ in a box of marble, next question. अब देखना फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है. 1 हैज, इससे 3 ज्यादा, इससे 4 कम, यही सब जो हमने ABCD वाला किया था क्वेश्चन. 1 is giving 3 to 4 and so on. Simple question. 3 less in a box of marbles, there are 3 less white marbles than the red ones. So white, red and next color is what? ग्रीन. ठीक है. 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वन. लेट्स से रेड वन x है, तो व्हाइट कितने हो गए? x माइनस 3 एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन. 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन. दैट मीन्स ग्रीन क्या है? व्हाइट से 5 कम. ठीक है. व्हाइट क्या है? 5 मोर देन द ग्रीन वन. सो ग्रीन व्हाइट से 5 कम हो गए. देयर आर टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स. तो ये टोटल 10 है. दैट मीन्स x क्या हो जाएगा? x इज व्हाट? 10 प्लस 3 13. ये क्या हो जाएगा? 13 माइनस 8. ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए? व्हाइट. हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स? 10 प्लस 13 प्लस 5, 28 मार्बल्स. ऑप्शन बी 28 इज योर आंसर. सी, तो अगेन आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट दैट इक्वेशंस के क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं. इजीली आप कंपेयर कर पाते हो. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे टफ होता है? क्वेश्चन टफ होता है या तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट टफ हो, ठीक है, या सपोज इक्वेशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टफ हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स से फॉर्मिंग द इक्वेशन इज टफ, एंड थर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैन बी इंक्रीज्ड इफ सॉल्यूशन इज टफ. So see, in these kind of questions, ना statement tough है, ना forming the equation is tough, neither solving the equation is tough. There are 3 steps to the question. First is understanding the question, forming the equation and solving the equation. Neither of those steps is difficult in this topic, right? So that is why we say that this is an easy topic and a scoring topic. Again, I would let's say request all of you to do this topic if you want to get a good score in your exam, because ये बहुत help करता है and no particular formula for this. ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं करना है, कुछ कंसेप्ट भी नहीं करना, इट्स जस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशंस. सो 4 persons, Alok, Bhupesh, Chandar and Dinesh, have a total of rupees 100 among themselves. Now remember to read the statement very carefully. Right now what we were doing in the previous question was each one has 100. Here A plus B plus C plus D, 4 persons have total of 100 rupees. Alok and Bhupesh, between them, have as much money as Chandar and Dinesh. So Alok and Bhupesh is equal to Chandar plus Dinesh. That means this part is equal to this part. So obviously ये किसके इक्वल होगा? 50 के. हाफ उसके पास है, हाफ उसके पास है, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट?
but Alok has more money than Bhupesh. So Alok has more money than Bhupesh. This is given. Chandar has only half the money that D has. So C has what? Half of D. So can I say, if I put C as half of D here, half of D plus D is equal to 50. Can I say what? 3/2 of Dinesh's amount is equal to 50. Now if you cancel, can I also write D is equal to what? 100/3. ठीक है. So D की वैल्यू क्या आ गई? 33.33. If D is 33.33, C is what? Half of D. C कितना आ जाएगा? Half of 33.33. This will be what? 16.67. ठीक है. C और D की वैल्यू पता चल गई. Alok has in fact ₹5 more than Dinesh has. So Alok के पास कितना हो गया? 5 more than D. 33.33 plus 5. 38.33. Who has the maximum amount? ये तो ऑलरेडी पता है. आलोक हैज मोर देन भूपेश. आलोक का 38 है, दिनेश का 33 है, सी का 16.67 है. So Alok has the maximum amount. Option A is my answer. Right? So in this also you have to form equations and compare किसकी वैल्यू ज्यादा है. Moving on to the next question of CSAT 2014. For a charity show, total tickets sold were 420. ठीक है. Half of these tickets were sold at the rate of ₹5. Total are 420. Half of these, that means 210 tickets sold at ₹5 each. One third of 420, 140 tickets sold at ₹3 each. Rest मतलब 210 प्लस 140. ठीक है. या फिर ये हाफ हो गई, हाफ बच गया, हाफ भी 210 होना चाहिए. तो दिस विल बी व्हाट? 70. रेस्ट फॉर ₹2. इफ यू डोंट वांट टू डू लाइक दिस, 210 प्लस 140, दिस विल बी व्हाट? 350. 420 में से 350 चली गई हैं ऑलरेडी. रिमेनिंग कितनी आ गई? 70. 70 tickets are sold for ₹2 each. What was the total amount received? This is your question. So 210 multiply 5, 1050. 140 multiply 3, 420. And 70 multiply 2, 140. This will give you what? 0, 1. 1610. Option C will be your answer. Right? So these were the two questions of CSAT 2014. Now moving on to the last year of discussion, which is 2013, and first question is, four friends A, B, C, D distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B. So A, B, C, D. A gets 1 less than B, C gets 5 more than D, D gets 3 more than B. अब देखो यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, D और B को कंपेयर कर लेंगे, B से A कंपेयर हो जाएगा. सो मैं क्या करूँगी? व्हाट विल आई डू? आई विल टेक द मनी ऑफ D एज X. ठीक है. D gets 3 more than B. So that means B को कितना मिला? X minus 3. ठीक है. Next, C gets 5 more than D. So C got X plus 5. And A and B में A gets 1 less than B. So B को जितना मिला, A got 1 less than B. That means A got what? X minus 4. ठीक है. So into who gets the smallest amount? This is asked. So in general, if you take the value of X as positive only, because money है तो that will be distributed. So D को X मिला, ये X plus 5 है. X में से 3 कम, X में से 4 कम. Obviously smallest amount is of A only. ठीक है. So option A will be my answer. Right? So moving on to the next question. इस क्वेश्चन में क्या है? A gardener
has 1000 plants. He wants to plant them in such a way that number of rows and number of column remains the same. So जो rows है, let's say 2 rows है, ठीक है, row 1, 2 rows, 2 columns. So can I say garden is like this? How many plants will be there? 2 multiply 2. Similarly, 3 rows and 3 columns. So how many plants? 9. Why? 3 multiply 3. Gardener wants number of rows is equal to number of columns. Let's say number of rows are n. Number of columns are also n. So that means how many plants will be there? n square. ठीक है, अगर रोज भी n होंगे, कॉलम भी n होंगे, सो कितने प्लांट्स होंगे? n स्क्वायर प्लांट्स. व्हाट इज द मिनिमम? एंड द गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. 1000 प्लांट्स उसके पास है, ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस, ठीक है. और कितने चाहिए होंगे? दैट मीन्स 1000 से क्लोजेस्ट n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट ही विल नीड मोर, ठीक है. सो बाय ऑप्शंस यू कैन डू 1000. लेट्स से गार्डनर इज एडिंग 14 प्लांट्स, 1014. इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. सो दैट मीन्स ये तो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नाउ इफ आई ऐड ऑप्शन 2, 1000 प्लस 24, 1024, right? Now this is the perfect square. We know 1024 is what? 2 to the power 10. That means 2 to the power 5 multiply 2 to the power 5. 32 का perfect square है. 32 square is 1024. So how many plants should be added? 24 plants should be added. Minimum amount of plants so that n square की form में gardener can plant. Okay. So these were all the questions of equations. Again in 11 and 12, all the questions that were there in equation form were mostly of reasoning only, because in 2011 and 12 there was a lot of emphasis on data interpretation, reasoning and other topics as well, right? So since the pattern has been shifted, you can see that for the past 10 years at least equations के questions have been asked every year. 3 to 4 questions every year. Questions have been easy, apart from let's say 1 to 2 questions in the 10 years. Okay, so every year level of difficulty of questions have also been easy, right? So I think this is one of the very scoring topics which you should lay emphasis on, right? Thank you so much for watching the video.